नमस्कार, स्वागत है हमारे खास पेशकश मार्केट और राजनीति का महाकुंभ में। मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए किस विजन और हौसले के साथ आगे बढ़ा जाए, इस राह में आने वाली चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए, ऐसे तमाम मुद्दों पर द इकोनॉमिक टाइम्स के ग्लोबल बिजनेस समिट में महामंथन हुआ। और इस मेगा समिट में पीएम मोदी ने ग्रोथ का रोड मैप रखने के साथ साथ सरकार की नीतियों को भी सामने रखा। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और राजनीति के तमाम धुरंधरों ने भी अपने विचार रखे। वहीं दिग्गज इकोनॉमिस्ट नोरियल रूबिनी जैसे और कार्ल पेई जैसे हस्तियों ने भी अपने विचार रखे। द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाली नीतियों और तकनीक के इस्तेमाल से योजनाओं में तेजी समेत अपनी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 9 साल में गांव, गरीब का खास ख्याल रखा है और अब लोगों तक सरकारी योजनाओं का पूरा पैसा पहुंचता है। हमारी सरकार अभी तक अलग अलग स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत 28 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुकी है। 28 लाख करोड़। अब आप सोचिए, राजीव गांधी जी ने जो कहा था उसी बात को मैं आज के साथ जोड़ूं तो 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचता वाली बात को पकड़ूं तो 85% यानी कि 24 लाख करोड़ ये रकम किसी के जेब में चली गई होती, किसी ने लूट लिया होता, रफा दफा हो गई होती और सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए गरीब के पास पहुंचा होता। लेकिन चूंकि मैंने रीइमेजिन किया, डीबीटी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी, आज 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, 100 के 100 पैसे उसके पास पहुंचते हैं। ये है रीइमेजिन। साथियों, कभी नेहरू जी ने कहा था कि जिस दिन हर भारतीय के पास टॉयलेट की सुविधा होगी, उस दिन हम जान जाएंगे कि देश विकास की एक नई ऊंचाई पर है। मैं ये पंडित नेहरू जी की बात कर रहा हूं। कितने साल पहले की होगी आप अंदाज कर सकते हैं। मतलब नेहरू जी को भी समस्या का पता था, लेकिन समाधान की तत्परता नजर नहीं आई। और इस वजह से देश का बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक मूल सुविधाओं से वंचित रहा। भारत की रैपिड ग्रोथ के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। लेकिन देश में पहले क्या स्थिति थी और जो स्थिति थी वो क्यों थी? इवन ईटी में तो बड़े बड़े एडिटोरियल्स इस पर छपे हैं, लोगों ने अपनी ओपिनियन दी है और उनमें जो बात प्रमुखता से रही है वो ये कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसलों में देश की जरूरत को कम देखा जाता था और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी। इसका जो नतीजा निकला उसका भुक्तभोगी पूरा देश रहा है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को साइलोज में देखने की प्रैक्टिस को बंद करके किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी के रूप में रीइमेजिन किया। आज भारत में 38 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवे बन रहे हैं और
डेली 5 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनें बिछ रही हैं। हमारी पोर्ट कैपेसिटी आने वाले 2 वर्षों में 3000 एमटीपीए तक पहुंचने वाली है। 2014 के मुकाबले ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर के 147 हो चुकी है। इन 9 वर्षों में लगभग 3.5 लाख किलोमीटर रूरल रोड बनाई गई हैं। करीब 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। ये सारे 9 साल का मैं हिसाब दे रहा हूं आपको, ये याद कराना पड़ता है। इन्हीं 9 वर्षों में 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर बना करके दिए गए और ये 3 करोड़ का आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कितने ही देशों की इतनी आबादी भी नहीं है जितने घर बना करके हमने 9 साल में भारत के गरीबों को दिए हैं। ईटी ग्लोबल इकोनॉमिक समिट में ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2024 तक भारत में रोड कंस्ट्रक्शन अमेरिका के बराबर होगा। The vision of our Prime Minister is to make India as Atmanirbhar Bharat. The target given by the Prime Minister is of making of economy of $5 trillion. And now presently we are the fastest growing economy in the world. Anywhere for any industry, trade and business, infrastructure is very important. The water, power, transport and communication, without that we cannot develop industry, and without industry we cannot get capital investment, and without capital investment and industry we cannot create employment potential. So basically the world-class infrastructure is a challenge and is a mission for all of us given by the Prime Minister. So creation of infrastructure of international standard, this is one of the important tasks, and particularly I am related with the road ministry, and I am confident that at the end of 24 our road infrastructure will be equal to the US road infrastructure. That is to be target in my mind. Presently, the most important thing related with the economic activity, that our logistic cost is 16%. China, the logistic cost is 8 to 10%. In the European country, it is 12%, and the USA, it is 12%. So target is to take to this logistic cost up to single digit. That is to be 9%. And for that reason, we are planning for making of big highways where 100% we can save the fuel and time, by which we can reduce the cost. द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट में केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार की नीतियों से भारत में आज विकास की दर ऊंची है और दूसरे देशों के मुकाबले भारत में महंगाई भी काबू में है। We all know that 1 rupee invested in infrastructure gives us 3.6 rupees worth economic activity in the economy, right? So this change, this difference is what created a situation where India is today having high growth, moderate inflation, compared to global scenario which is having low growth and high inflation. That's a fundamental difference, and that is showing the results. Structurally, India's economy is changing from 27% at its nadir investment as a part of India's GDP. It has grown to 31%. And this is the public investment program in front of you, friends. We got 3-4 stations done.
Now we know what are the challenges. Now we know what are the design issues to be faced. So now scale it up. So we started on a journey for about 200 stations to begin with, then ramped it up to about 1,200 stations. And today we are working on 1,275 stations as we speak. So each of the stations, Prime Minister gave us a very clear task, and is a tough taskmaster, we all know. Very clear task that think 50 years ahead. Don't design for today, design for 50 years. Create new urban spaces. Integrate all the modes of transportation within the station. There is city on both sides of the stations. Let the station become the entity which basically integrates both sides of the city, doesn't divide. These are the challenges that he put before us. And friends, the designs which have been created by our teams, phenomenal. If you look at some of the designs, this is New Delhi station. Can you imagine? And this is not something which is there in faraway future. This is the complete design done. All the urban planning agencies who have to give their permits, some 100 odd permits taken, tender already issued. Great pride. Prime Minister launched it on 1st of October 2022. Within first 100 days, we have covered more than 200 cities. And recently at Davos, the industry leaders actually gave statements, and they were published in Wall Street Journal and all, that this is the fastest deployment happening anywhere in the world. But what gives bigger happiness? What gives bigger happiness is not just the pace of deployment. It is the development of India's own 4G and 5G technology stack. The stack is now ready. It was initially tested for 1 million simultaneous calls. Then it was tested for 5 million simultaneous calls. And now it has been tested for 10 million simultaneous calls. Phenomenal success. Today, there are at least 9 or 10 countries which want to try it out, and it will be rolled out. And very happy to share with all of you Prime Minister's vision of making India as a telecom technology exporter. Today, there are 2 Indian companies who are exporting to the world, telecom gear. Coming 3 years, we'll see India as a major telecom technology exporter in the world. आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि सरकार करप्शन पर लगाम लगाने में सफल रही है और आज सरकार का भेजा गया पैसा पूरी तरह से लोगों तक पहुंचता है और इसमें टेक्नोलॉजी ने बड़ी भूमिका निभाई है. India has become a preeminent nation in the use of technology for its people, for its governance, for its economy, becomes starkly and sharply clear. In the first goal, for example, for decades India was known as a country where great people lived, smart people lived, a lot of smart people lived, big population, but governments that never functioned for its people, and that age-old quote from a then Prime Minister that says 100 rupees leaves Delhi, 15 rupees reaches beneficiaries, and the 85 rupees was the cost of governance. That, in a sense, described India for several decades, was turned on its head by use of technology, the building of the India stack, and today when 100 rupees leaves, and I have been as a minister party to many events in remote parts of India where 100 rupees that is sent from Delhi, 100 rupees reaches the beneficiary's account responsively, without leakage, without corruption, without any mediation. And that, more than anything else, describes the power of technology that has transformed the age-old narrative of Indian democracy and Indian governance. Look at the issue of opportunities. In 2010, in Parliament, I remember I was an MP then, I raised this issue how 10 groups in India had cornered 98% of the Indian banking system's net worth. And while there were many smart people in India, most opportunities, you hear about stories of Satya Nadella or Sundar Pichai, opportunities and stardom and success really came only for
youngsters without any famous last name or any great connection, if they left India, went abroad. And in 22, if you look report card that particular fact, you find today 90,000 startups, 102 unicorns, no famous last names. Nobody is connected with a famous grandfather anyway. They've all built their franchises, built their enterprises, built their brands, raised capital, and made successes on their own. That is again a transformation possible because of technology and digital India. तो ग्लोबल बिजनेस समिट के खास हाइलाइट्स पर इस खास शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश के साथ। नमस्कार।